Dear children, last day I taught you history, the making of a global world. In this chapter, also taught Corn Law and effect of the Corn Law. Now, open the page number 73. Effect of Oblation the Corn Law. Corn Law. The effect of oblation of corn laws are as follow. corn law हमारे मक्का के कानून को जब समाप्त किया गया तो उसके क्या प्रभाव पड़े? कंजप्शन इंक्रीज, उपभोग में वृद्धि हुई. एज फूड प्राइस फेल, वस्तुओं के दाम, फूड प्राइस के दाम, जो खाने पीने चीज़ें उनके दाम गिरे. कंजप्शन इन ब्रिटेन इंक्रीज, और ब्रिटेन में कंजप्शन मतलब उपभोग बढ़ा, खाने पीने चीज़ों की उपयोगिता और बढ़ी, लोग और खरीदने लगे. मोर डिमांड फॉर द मिड 19th सेंचुरी. फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन लेड टू हायर इनकम एंड मोर डिमांड फॉर कल्टीवेशन. ऑस्ट्रेलिया एंड वाज cleared cultivate more food grain to meet the increasing demand of Britain. बिल्कुल सिंपल भाषा है, इसमें बार बार एक एक अक्षर की हिंदी बताना उपयुक्त नहीं समझता हूँ मैं. रेल रूट एंड सी रूट. न्यू रेलवेज हार्बर्स वर नीडेड टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. अब जब उत्पादन बढ़ा, मांग बढ़ी, तो क्या हुआ? रेल रूट और सी रूट के माध्यम से उनका अधिक से अधिक एक्सपोर्ट मतलब निर्यात किया जाने लगा, एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तुओं को भेजे जाने लगा. मोर होम्स एंड सेटलमेंट. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स नीडेड मोर होम एंड सेटलमेंट. ऑल दीज एक्टिविटीज नीडेड capital and labor. Capital flow from financial center such as London. Immigration from Europe due to demand for labor. Nearly 50 million people immigrated from Europe to America and Australia in the 19th century. Migration. All over the world, about 150 million people had migrated in search of better life. अच्छा जीवन यापन करने के लिए नए स्थान खोजने लगे, एक स्थान दूसरे स्थान जाने लगे. डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी. By the 1819 there had been development of global agriculture economy. It was accompanied by changes in pattern of labor migration, capital flow and technology. It was accompanied by change in pattern of labor migration. कंपाइन माने क्या था? एक प्रकार की छूट देने के प्रावधान, कंपनसेशन से बना हुआ है. चेंज द पैटर्न, जो श्रमिक अपने आने जाने स्थान परिवर्तन करने में मतलब इधर से उधर नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे, तो उससे क्या हुआ? कैपिटल फ्लो एंड टेक्नोलॉजी मतलब इसका प्रभाव बढ़ा, अधिक से अधिक लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे. कैपिटल, अब भाई कैपिटल का प्रयोग करना ही पड़ेगा, कैपिटल यूज नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा. कैपिटल माने पूंजी. लो पेड वर्कर्स. समटाइम फूड कम फ्राम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे बाय रेलवे और शिप. ऑल दीज वर्कर्स वर डन बाय लो पेड वर्कर्स फ्राम साउथर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड कैरिबियन.
Now dramatic change. Some of this dramatic change occurred in West Punjab in India. The British rulers transferred Punjab into a fertile agricultural land by developing irrigation system for growing wheat and cotton for export. The canal colonies, as these areas were generally called, were settled by peasants from other parts of Punjab. अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, पंजाब को डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ सिंचाई की व्यवस्था की। बाकी और तो समझते हैं, जानने समझने आप ही पूछिएगा। रॉ मटेरियल क्या है? द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड रबर इंक्रीज लार्जली फॉर सप्लाई to British textile mills and other industries. Regional commodities developed fast between 1820 and 1914. The world trade had multiplied 25 to 40 times. Nearly 60% of the world trade consisted of trade in primary products like crops like wheat, cotton and minerals, that is coal. Role of technology and supported to imperialism. Role of technology played an important role in the transformation of the 19th century world. These technology advances were needed by political, social and economic factors. In this way, the means of transport and communication like railway, steamship, telegraph, etc. were essential for colonization and transferring the product or resources to its final destination. To illustrate, the food could be moved from quickly and at less expenses from the interior to the markets. Meat trade. The meat trade was another example of how new technology facilitated imperialism. Before the 1870s, animals were transported from America to Europe, where they were slaughtered. This system caused a number of problems as under live animals occupy more space in the ship. Many animals died during the transportation, caused loss. Some animals become unfit for human consumption. Due to hunger, animals lost weight and even fell ill. On account of above reason, the meat prices were high and only the rich could afford to eat meat. The invention of refrigerated ship made refrigerated का मतलब है refrigerated फ्रिज जिसे आप लोग बोलते हैं. Ship made it possible to transport perishable item without it getting spoiled. As a result, the animal began to slaughtered in America, Australia and New Zealand and then shipped as frozen meat to Europe. The result of the above technique was under lowered meat price in Europe. Poor could now afford meat and other dairy products. The living conditions were improved. To conclude, the living standard of people in Europe improved, bringing in social peace but support for colonization abroad. Now, late 19th century colonialism next day. Thanks.